changing. So that is just to mesmerize you. You don't look at the buy and sell bit. Look at the last traded price. That's very important because if you see the rates every now and then जुक 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 वो जुक जुक होता है वो मत देखो वो मत देखो आज समझ भाई यस सर, गुड इवनिंग सर। अभी अब बोलो भाई सर एक्चुअली आज यानी अभी डॉक्टर अमित जो हमारे साथ स्पीकर में है, जस्ट ही गेव मी एन अपडेट फॉर फोर स्टॉक्स वेर इन ओपन इंटरेस्ट हैव इंक्रीज्ड ह्यूज, यानी टू डिजिट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज के दिन में ऑन द शॉर्टर साइड। वन इज गुजरात गैस, द अदर इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तीसरा है पॉलीकैब और चौथा है दीपक नाइट्रेट। यानी शॉर्ट पोजीशंस आज के दिन में बढ़ी है वहां पर, और भाव भी नीचे गया है, 2 to 5% नीचे गया है। For some days, next few days, I am short on SBI as such. Okay. वो मत बोलो ना Okay. हाँ, और ओवरऑल आउटलुक यानी आज जो आरबीआई का पॉलिसी आया उसमें जो 0.5% रेपो रेट बढ़ा है, तो जो एनबीएफसी से इट विल बी नेगेटिव फॉर देम। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और जो नॉर्मल जो हैं, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जाने एचडीएफसी लिमिटेड, दैट इज ओके बिकॉज दे विल पास ऑन दैट कॉस्ट टू देयर कस्टमर्स। तो एनबीएफसी के लिए ज्यादा नेगेटिव है ओवरऑल। सेकंड थिंग सर, इन्फ्लेशन का आउटलुक उन्होंने नेगेटिव दिया है, बट दे विल ऑलवेज सी द अमेरिकन एंड यूरोपियन जो वहां पर क्या हो रहा है इन्फ्लेशन के रूप से, तो वहां पर तो बहुत नेगेटिव है ओवरऑल। यूरोप इज हाईली नेगेटिव अगेंस्ट अमेरिका, बिकॉज अभी जो रशिया अमेरिका और यूरोप का चल रहा है टसल, उसमें द वॉर इज बिटवीन अमेरिका प्लस रशिया वर्सेस यूरोप, अभी ऐसा हो रहा है बिकॉज ये दोनों के पास गैस और पेट्रोल है, क्रूड है, और यूरोप के पास कुछ नहीं है। और यहाँ पर अभी जो न्यूज आ रहा है वो ऐसा है कि बाय अगस्त सितंबर रशिया विल कट ऑफ द गैस सप्लाई टू यूरोप, और उसकी वजह से दे विल बी एट बिग बिग प्रॉब्लम इन यूरोप। अमेरिका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, कमोडिटीज या जो भी यानी बेस मेटल है या गोल्ड है, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रूड में भी, बिकॉज दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसर्स। तो यूरोप में वो प्रॉब्लम रहेगा अभी और लॉन्ग टर्म पे रहेगा। एंड आई थिंक द फर्स्ट साइन ऑफ व्हाट यू से डीप डिप्रेशन विल बी देयर इन यूरोप इफ यू सी ऑन द एम्प्लॉयमेंट पार्ट ऑल्सो। और युद्ध यानी ये जो अभी वॉर चल रहा है वो इजीली बंद नहीं होने वाला है। 1 or 2 countries एज पर एस्ट्रोनॉमिकल व्यू, 1 or 2+ countries will also jump into this war by June, July, August. That many common व्यू है एस्ट्रोनॉमिक्स में। तो वो एक है चीज, प्लस क्रूड का भाव और नेचुरल गैस जो दो सब्सिडियरी है, दोनों हैंड इन ग्लोव अप्रोच चलता है उसमें, तो उसमें प्राइस अभी बढ़ा है 121 120 121 के आसपास ही रहा है क्रूड। प्लस नेचुरल गैस लास्ट 3 दिन से अराउंड 14% अप है। तो बेस ये जो है अपना इन्फ्लेशन इंडिया में, दैट विल बी ऑन द हायर साइड एंड दैट विल बी नेगेटिव फॉर फर्टिलाइजर कंपनीज एज सच। प्लस जो कंज्यूमर्स हैं एंड यूजर्स सीएनजी और पीएनजी में, दे विल बी नेगेटिव। और प्लस जो इंद्रप्रस्थ गैस है, आईजीएल है, एमजीएल है, प्लस गुजरात गैस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो भी नेगेटिव रहेगी, बिकॉज उनको प्राइस हाइक नहीं मिल रहा है, बट प्रोक्योरमेंट में दे आर प्रोक्योरिंग एट हाई प्राइसेस बट दे आर सप्लाइंग एट लो प्राइसेस। तो वो वहां पर नेगेटिव है उनके लिए, जैसे बीपीसीएल एचपीसीएल है उसी सेम सेम तौर पे। प्लस 5G रोल आउट में कुछ इश्यू आया है सर। आज के दिन में एयरटेल और रिलायंस दोनों डाउन थे, ह्यूज पोजीशंस बिल्टअप हुई है वहां पर भी। 5G में कुछ इश्यू है फॉर दिस ऑक्शन में गवर्नमेंट के साइड से, तो दैट विल बी अपकमिंग न्यूज इवेंट, आई डोंट नो एक्चुअली, बट देयर इज सम इश्यू इन 5G ऑक्शन। तो ये स्टॉक पे, दो स्टॉक में वो है अभी प्रॉब्लम। एंड आईटीसी में अभी आज के दिन में कुछ रिवर्सल हुआ है, बट आई कैन नॉट से लॉन्ग टर्म रिवर्सल है या शॉर्ट टर्म है, बट देयर इज सम सेलिंग प्रेशर है सीन इन आईटीसी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मेनी डेज। तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन सर। या दैट इज द ऑब्जर्वेशन सर
निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात नहीं करनी है, इसलिए वो अभी बात नहीं करूंगा। बट दैट इज ओवरऑल व्यू, जो कि क्रूड इन्फ्लेशन ओवरऑल जियो पॉलिटिकल के ऊपर ही अभी फोकस है, एंड दे आर नेगेटिव हो रहा है अभी सभी जगह पर। तो मेरे को बेरिश लग रहा है अभी मार्केट, सर, फॉर द Today, RBI announced the 50 paisa repo hike. Now, we said that CRR hike did not happen, so markets are bullish. That's rubbish. 50 basis point repo rate. Only some 22% people were expecting that. How is it priced in? 50 paisa? My God, that's lot. So everything is going to become expensive. What I mean on the interest side. So how it is good for the market? In the long run, yes. But in the long run, we will be in bed or dead. तो वो लॉन्ग टर्म का इधर बात नहीं है. इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है ना, ऐसा बढ़ा है. I was thinking 30 paisa. A friend of mine was expecting 40 paisa. Now it's 50 paisa. It's too much. So this repo hike will have a very big dent in the profitability, and the G-Secs will bleed, and ultimately everybody will have a mark-to-market loss in G-Secs, all the banks. Those are holding them. Okay, सर एक now चीज और ऐड करना था। रिवर्स रिपो बढ़ाया नहीं है आज आरबीआई ने। रिवर्स रिपो में बैंक्स के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रहती है, दे कीप इट टू विथ आरबीआई। तो उसमें रिवर्स रिपो पे वो अगर ज्यादा बढ़ता, अभी बैंक्स के पास लिक्विडिटी ज्यादा है, तो दे विल बी अर्निंग ह्यूज। तो अभी बैंक्स के पास फ्री फंड्स ज्यादा है, बट दे आर नॉट एबल टू कीप इट एट हायर प्राइस। सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट फॉर बैंक्स एज सच। जो आपने एमटीएम का जो बोला वो तो सही है, बट ये चीज अभी जो है ना वो नेगेटिव लग रहा है मेरे को, रिवर्स रेपो में। okay. नीलेश भाई बोलिए. सर एक चीज आज ऑब्जर्व किया मैंने, जीएनएफसी में 4-5% डाउन था, और ओआई भी मैंने आज किसने मंदी का ओडिया बनाया है कुछ 7-8% का। और नेचुरल गैस के भाव वहाँ पे बढ़ रहे हैं अमेरिका में ड्यू टू रशिया यूक्रेन। तो जो भी ये फर्टिलाइजर बेस्ड जो भी स्टोरी जो चला रहे थे ऊपर में माल चिपकाने के लिए, वहाँ पे सब गायब हो जाएंगे। और पर्सनली मेरे को लगता है जीएनएफसी 300, 350, 400 का भाव वो भी ओवर प्राइस है। यहाँ से कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है इसमें। नहीं, उसमें आई अग्री विथ यू, बस उसमें ऐसा बात है कि उसका जो मार्केट कैप है ना बहुत छोटा है. हाँ और 3,000 करोड़ रुपया कैश है उसके पास. ओके तो वो ठीक है, वो कोई मतलब नहीं है, वो घटेगा ही. मैं ना नहीं बोलता हूँ, बट आई डेजिस्ट फ्रॉम शॉर्टिंग सच शेयर्स, ओके ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड। बाकी क्योंकि वैल्यू बाय आ जाता है ये वो. उससे अच्छा पॉलीकैब। मेरे को लगता है हाँ बलरामपुर चीनी बेचो. ओके ये ये शुगर 16 सेंट तोड़ देगा. इतना सप्लाई है, इतना सप्लाई है, 16 सेंट तोड़ देगा. ये 200 रुपया हो जाएगा. बलरामपुर जी नहीं। या ओके ओके, तो चलो हम लोग नहीं नेकेड तो नहीं, नहीं, पुट पुट आई ले एम लूंगा नॉट मैं सर। सजेस्टिंग यू टू शॉर्ट और गो लॉन्ग. आई एम एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन. यस यस अंडरस्टूड सर, वो मैं पुट ले लूंगा, मैं तो अपना रिस्क क्या है डिटरमाइंड हो जाएगा पूरा। अरे थैंक यू सो भाई मच। साहब, ये पुट बूट लेना मत. अच्छा ओके। हमारे से कंपटीशन मत करो. अरे सर हम छोटे अरे प्लेयर हैं, ओके ओके. एक लॉट करने वाले हैं तो क्या अरे नो कंपटीशन। प्रॉब्लम. अरे मजाक कर रहा था राजा. थैंक यू सर।
सर और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरी तरफ से, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और प्लीज डोंट टेक माय यूज सीरियसली। अगर आपको करना है, शॉर्टिंग करना है तो यू प्लीज डू इट एट योर रिस्क। प्लीज डोंट कम इन माय डीएम एंड से दैट आपसे ये बोला था तो अभी लॉस में है हम। तो आई आल्सो गेट द डीएम्स एट माय एंड आल्सो सर। अरे ठीक है ना यार, आता है क्या उखाड़, वो से भी मेरे घर पे आएगा, वो क्या उखाड़ेगा मेरा। सर आज वो एक सर मजे की बात बोलूंगा अपना सिस्टम के बारे में। वो लालू प्रसाद यादव का कोई केस था, उसको खाली 6,000 रुपया फाइन लगाया, बोलो। तो हंसने की बात है ये। घास चरे के कौन सा केस था पता नहीं, 2013, 6,000 रुपया लगाया फाइन। एनीवे चलो। आमिर भाई बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग समझ सर सभी को। गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग। सर क्या मतलब मार्केट का व्यू जो है नेगेटिव अभी भी कंटिन्यूड है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा व्यू मेरा कुछ सेक्टर वाइज और स्टॉक पे डिफरेंट है। टीवीएस मोटर्स में मेरा लॉन्ग है, कल क्रिएट किया था, अभी भी कंटिन्यूड है मेरा। सीएनएक्स ऑटो पे मैं थोड़ा सा मेरा व्यू पॉजिटिव है। बाकी फार्मा न्यू नेगेटिव ऐड हुआ है लिस्ट में, तो इट्स ऑन शॉर्टिंग साइड। बैंक निफ्टी को थोड़ा और डिप करने का वेट कर रहा हूँ दबा के शॉर्ट करने के लिए। अभी तो सारे शॉर्ट्स लगभग कवर कर डाले आज की उछल कूद में, तो नथिंग मच। और वेट एंड वॉच का मोड है, थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कल की एक्सपायरी एक बार वीकली वाली फिनिश हो जाए, देन गो फॉर द फ्रेश ट्रेड्स। एक्सिस बैंक शॉर्ट था, कवर कर लिया, उसमें ठीक ठाक थोड़ा सा उसमें जर्क कर रहा था ऊपर नीचे बार बैंक निफ्टी रेजअप कर नहीं रहा था, नहीं तो भाई निकाल साहब, दिया। भाई साहब, भाई साहब, यस सर, आपने यस सर। क्या किया ना, उसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या करने का प्लान है? हाँ बस। सर ऑनेस्टली ऑटो पे थोड़ा सा व्यू बुलिश है, तो टीवीएस पे लॉन्ग है। एंड स्टेट बैंक मतलब पीएसयू बैंक्स मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मेरी नजर है। अप टू सर्टेन लेवल 480 के आसपास जाकर के लॉन्ग करने का इरादा है। और अभी कुछ सर खास क्लैरिटी मिल नहीं रही, सो आई एम नॉट एक्टिव वेरी मच एक्टिवली। आई एम सिटिंग ऑन अ साइड एंड वेटिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब इन। ओके, थैंक अमित यू। सर, अरे मैं कुछ रखना चाहता हूँ यहाँ हाँ पे अभिषेक भाई, कि आप अभिषेक बोल भाई। रहे हो कि ऑटो सेक्टर यहाँ से आपको लॉन्ग लग रहा है, तो ये ऑटो का जो इंडेक्स चल रहा है निफ्टी ऑटो, वो सीएनएक्स तुम्हारा ऑटो। बैठा हुआ है 2018 के हाई पे। और अगर आपको फंडामेंटली कुछ लगता है कि 2018 से लेके अभी का जो सिनेरियो है काफी अच्छा हुआ है बोले, तो आप लॉन्ग कर सकते हो। और यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है, तो यहाँ पे वो पक्का शॉर्ट है ऑटो इंडेक्स पूरा का पूरा, मतलब अभी तो नहीं, अब देख नहीं के नहीं करना मतलब। नहीं अभिषेक, आई हाँ विल सर। करेक्ट यू। यस सर। He is 100% right, because auto index or auto stocks are at quoting at 50p, 100p. So you should be long such stocks. यस सर, दैट इज माय व्यू एक्चुअली Yes, see, he is फंडामेंटल। हाँ agreeing. सर। He is agreeing. यस सर, यस सर। Hmm. ओके अभिषेक भाई, थैंक्स फॉर Thank योर you. व्यूज एज वेल। Thank you. थैंक यू नहीं सर, नहीं, थैंक यू। I'll just put out a हाँ ठीक है, fundamental कोई नहीं है, fundamental कोई नहीं, things I'll कोई just नहीं। put out on you, ठीक है, कि ओके ये क्या ओके है कि मैं तो बता दूं, I'll just tell you my Alt, view of it. trading D. ओके। हेलो, हाँ, बोलो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सुमत सर, गुड इवनिंग ऑडियंस। हाँ, good evening, सर जी। ब्रांड का पहले व्यू है कि ब्रांड अपना पीछे से लॉन्ग व्यू ही था, तो अभी उसका जो 124 लेवल है, मतलब मेरे हिसाब से अगर वो ब्रीच करता है तो 130 35 बहुत जल्दी आएगा। और ब्रांड का सर ये है कि मतलब ब्रांड और जो अपना इंटरेस्ट रेट होता है, अगर फंडामेंटली देखे तो वो इनवर्स में चलता है, बट इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बट ब्रांड एक रेंज में था, अभी कुछ दिन में ऊपर आया। तो अभी ये क्यों ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट अभी काबू नहीं कर पा रहा है इसको, रीजन बीइंग ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है ब्रांड में, जो है जो उसका राइज है, मतलब सप्लाई बॉटलनेक है। जिस दिन कहीं से जो भी सप्लाई ब्लॉक्ड है वो खुल जाएगी, तभी ये काबू में आना है, और जब तक वॉर है वो खुलने को नहीं है। और या फिर यूएसए अपना जो शेल ऑयल है उसमें कुछ करे, वो क्यों नहीं कर रहा पता नहीं। और सर दूसरा थोड़ा इंटरेस्ट रेट का ये है कि आई हैड अ टॉक विद माय फ्रेंड्स इन द यूएस हु आर इन सम फर्म्स, तो वो थोड़ा बता रहे हैं कि वहाँ पे जो हायरिंग है बिल्कुल फ्रीज हो गई है, और जो वो क्वार्टरली बोनसेस एंड ऑल देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो बंद कर दिए हैं।
और कुछ लोगों को बोला है कि यू आर नाउ ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी परमानेंट नहीं हुए थे। और सेकंड, जो हाउस अभी कुछ लोगों ने फ्लोटिंग रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे अपना लोन ले रखा था, तो अभी जैसे इंटरेस्ट रेट हाई हुए हैं, तो उनका जो हाउसिंग लोन है, जो कार लोन है, जो कोई बिजनेस है, दे आर नॉट रिपेइंग इट। और कुछ लोग वो कह रहे हैं कि अभी हमें दिखते हैं कि पार्किंग लॉट्स में कार्स में ही स्टे कर रहे हैं, तो दे हैव लेफ्ट देयर हाउसेज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो वो 1-2 महीने का भी अपना ईएमआई नहीं दे पाए। तो इन शॉर्ट सर, कि अगर ये इंटरेस्ट रेट फेड हाइक करता ही रहता है, जैसे उसने बोला कि अभी करेगा करेगा ही पूरा साल, तो वी विल डेफिनेटली फॉल इनटू रिसेशन। और अगर नहीं करता तो फेड की क्रेडिबिलिटी खराब है, और फिर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होना। और सर रही अपनी इधर की बात, तो मार्केट शॉर्ट ही है, सेल ऑन राइज है। इन शॉर्ट, दैट्स इट सर, थैंक यू। Thank you. DGS, come on. Good evening, Long Sharat time. sir. How are you? Fine, 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 fine. Good evening, Samarth bhai, Abhishek bhai. कैसे हो सब? बस Good evening, sir. very well, very well. Didn't connected with you today. Sorry for that. We'll connect you tomorrow, sir. Yeah, no worries, no worries. So, markets view, I think once again very weak. The cues are looking weak, and price action, especially if you see across sectors, it's not looking great. Hello? Yeah. Go on. Yeah, you are audible. Okay. So the big event now is out of the way, which was the RBI policy meet, and there's going to be a 50 basis point interest rate hike, which is 0.5%. And since there are many Warren Buffett fans in the audience, Mr. Buffett has always said what that interest rates act as gravity on stock prices. तो जैसे gravity सबको नीचे खींच जाता है, same way rising interest rates will pull the stock prices down. And since I never give a view on the index, I'll just talk about specific stocks. On this very space, Deepak Nitrite, I've been saying since last 1.5 weeks, it's looking very weak. And today it's broken the key support levels also. And this stock was available at $400 in Feb 2020. उसके बाद thereafter ये 3,000 का भाव हो गया था, which was the 52-week high. And ये कंपनी जो है, they make sodium nitrate for industrial applications, ये वो. तो ये कोई कैंसर का ड्रग तो बना नहीं रहे कि 400 से 3,000 इसका भाव हो गया. And I think the stock will go back to triple digits. So it's a good shot if you have patience. I'm still holding it. And other stocks that I find very weak are in the mid cap IT space, especially Persistent Systems and Coforge, these two stocks. And Persistent PE is at 40, whereas you're getting Google at 21. So the valuations are completely out of whack. And other than that, I still have a negative view on Indigo, but as Sharat sir said, it's looking still strong. The price is not falling. So let's see what happens in that when the competition increases and crude doesn't seem to be coming down. And ultimately, I think cash and valuations will only matter. And sir mentioned Polycap today. I just saw Polycap market cap has more than PNB, and PNB is the second biggest national bank of India. So it's quoting at a higher, market cap than PNB, which is absurd. So just be careful and read the balance sheet. Just don't buy any stock just because it's a fancy, or because someone said, some fund manager said, etc. And so I had two questions, if I can ask. Yeah, please. So, sir, the first one was on Polycap only. So, obviously, the market cap is very high and everything, and the PE also is, I think, 38. But, sir, are you seeing anything fundamentally wrong also with the balance sheet? Because I have not gone through Yeah, the. it is. Huh. The balance sheet is horrible. Okay. Hmm. And then, so one second question I had. So, this is more on trading strategy. So, I remember a few days ago you had taught us something about if when you short a futures, if say position goes against you, that hedging strategy. Yes. So, just as an example, I'm giving this is not a recommendation for anyone. Ki, for example, today, abhi Deepak Nitrite ka close 1800 ka tha. I'm short from before. But say someone shorts it at 1800 and it goes to 1850. You had explained some option strategy to hedge that futures thing. So, if you can just repeat that, I'd forgotten. No, now the strategy is different. Okay. That strategy is only applicable after 15th of the month Okay. when the options become very cheap. Okay. Now the strategy is to buy at the money options.
Okay, so buy puts. Yes, Okay, okay. At the money, okay. at the money. ठीक है. And then post 15th, it will be out of the money, right? Yeah. Okay. And on And both and sides? no, now I bought off SRF. Hmm. 750 ही मिला, हाँ. तो 2500 का लिया. अच्छा. Okay. Deep in money. Okay. So that way it's you're already So, covered. yeah, so there are various strategies to deal with various uh, stocks. Now, Hmm. I had bought off this ICICI Prudential. Hmm. That's 7 rupees after 1100, अच्छा. which I sold at 29. Okay. So there is no one strategy as such. ठीक है. Strategies keep on changing. Correct. If you want, I can keep you updated on that. Yeah. So I'll connect with you privately then. So let the space Yeah, continue. yeah. Okay. Thank you everyone. Dr. Thank Amit, you. Good evening, sir. good evening. एज पर द डेटा मार्केट में तो कोई व्यू चेंज नहीं है, मगर आज जो एक्सट्रीम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है, जो एफएनओ स्टॉक में नॉन इंडेक्स है ज्यादातर और मिड कैप वाले है, उसमें मींस हैवी मींस इट इज अनयूजुअल, तो काफी शॉर्ट बिल्डअप हुई है. इंडेक्स वाइज तो 2 दिन के लिए ये लोग दिखाएंगे ऐसे ही, तो उससे बीस फंस मत जाना, यही एडवाइस है. इंडेक्स में 2-4 स्टॉक ही घूमते रहेंगे, बाकी सब जो चल रहा है उससे भी इंटेंसिफाई होगा अभी है, तो वही है. कुछ चेंज नहीं है ज्यादा. ओनली इंडेक्स 2 दिन के लिए होल्ड होगा ऐसा लग रहा है एज पर द डेटा सिस्टम. तो इंडेक्स से फुल मत हो जाना, उससे मींस फंस मत जाना कि सब ग्रीनरी है, ऐसा नहीं होगा, ये लग रहा है. बस वही है सर अभी तो. नहीं डॉक्टर और साहब, हाँ, यस सर. एक बात पूछना है. आप बोलिए सर. बोले कि साइड काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है. यस सर. मैं बोलता हूँ, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है? नहीं, वो कैसे मींस जनरल क्या होता है, जो फ्यूचर डेटा मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ ना, इट इज द जीरो सम गेम है, मगर उसमें सेंटीमेंट बहुत होता है. तो सेंटीमेंट कैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 4% में भी फॉल हो रहा है और उसमें मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम मींस यहाँ पे फ्यूचर में तो हम ओपन इंटरेस्ट से ही वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं. तो उसमें ये होता है कि वो सेलर साइड है, इन्फ्लुएंस ज्यादा है लोगों को, मींस ये व्यू लग रहा है कि गिरेगा ही, अरे तभी तो वो गिरता है. बराबर है, बट वो कोई बायर होता है तो ही बेचेगा ना. हाँ, मगर वो क्या है कि वो फॉलिंग है सर. उस पे क्या होता है कि 4% सपोज कोई गिर रहा है, अगर नहीं मैं उसमें बात नहीं जस्ट नहीं सर. जस्ट जस्ट यस सर. આપણે यस हेल्दी आर्ग्यूमेंट कि ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ा. ओके, यस सर. यस सर. तो किसी ने बेचा, किसी ने लिया, यस सर. तो व्हाई आर यू सेइंग कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ? वो स्ट्रेंथ होती है ना, एक बायर की स्ट्रेंथ होती है और एक सेलर की. सपोज के 8% गिरा है, स्ट्रेंथ उसके अलग बाद है, स्ट्रेंथ अलग है. हाँ, मैं तो बोलता वो हूँ लिफ्ट नहीं वीक हो होल्डर्स ने लिया. रहा. हाँ. yes. नहीं, खाली आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं बोल नहीं रहा सर, मैं समझ रहा हूँ सर, मगर इसमें ऐसे ये है ना, सब्जेक्टिव है ये, इस पे डिबेट हो सकती है, मगर ज्यादातर जो इम्प्लीकेशन ये होता है कि कोई 4% नीचे भी अपना माल बेच रहा है और लोग जो हूँ. उठा रहे हैं ना. नहीं, कोई फ्यूचर यस. में माल नहीं बेचता है, वो कैश में माल बेचता है. यस सर. जिसमें उद्दा बदला होता है वो आप बोल सकते हो, लेकिन जो कैश में माल बेचता है, जैसे ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, आज यस सर. 29 लाख का डिलीवरी है, तो यस. कौन माथे मारा होगा भाई? कोई नहीं. आर्बिट्राजर.
यस सर, यस अंडरस्टैंड। और एक और ऐड करना चाहता हूँ इसमें ज्यादातर जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें जो ये शॉर्ट सेलिंग में बोल रहा हूँ इसको हम मान के चल सकते हैं, उसमें ज्यादा इम्पेक्ट करता है ना कि लार्ज कैप में, क्योंकि वहां पे डिलीवरी पे लिक्विडिटी कम होती है, उसकी वजह से यहाँ पे फ्यूचर में वो डिलीवरी इतनी एडजस्ट मीन्स ऑब्सॉर्ब भी नहीं हो पाती, तो वो रिफ्लेक्ट होता है शॉर्ट स्मॉल और मिड कैप में। बाकी लार्ज कैप में ये फ्यूचर ये जीरो गेम है, उसमें इतना मीन्स इम्पेक्टेबल नहीं होता। और मैं समझ गया सर, एंड थैंक यू सर, इस पे और मुझे एनालिसिस करना चाहिए। ओके, कंक्लूजन एक ओपन रहेगा मेरे लिए भी ये। थैंक यू वेरी और मच सर। दूसरा बात है डॉक्टर साहब, यस सर, यस सर। दोबारा एक्सिस बैंक का गाना सुनो। वो तो इतनी इतनी सबसे सबसे मीन्स वीकेस्ट बैंक है बैंकिंग सेक्टर में अभी। उसका आप मंथली 200 ईएमए ले लो, वीकली ले लो, कोई भी मूविंग एवरेज जो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग एनी टेक्निकल गाय कैन बी अंडरस्टैंड। वो बेसिक भी जानता होगा तो भी पता चल गया इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं, कोई बायर ही नहीं आ रहा, और एक टाइम फ्रेम पे वो वीक है। तो काफी मैंने ये ऐसा बहुत रेयर केस में कोई स्टॉक मिलता है, वरना क्या होता है कि डेली में वो वीकनेस बताएगा, मंथली या वीकली पे वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई देगी। इसका तो हर एक टाइम फ्रेम में, इवन अवर्ली में भी ऐसा है। बोलो सर, आज उसका जो रिट्रेसमेंट होता है ना, एक कोई भी कुछ स्ट्रेंथ वाला स्टॉक होता है तो एटलीस्ट 23 या 38% रिट्रेस करता है। अगर डेली पे ये जब मैंने 702 का लेवल दिया था उस टाइम पे वो 702 लेवल था। आज जो लास्ट फॉल था उसका स्विंग लो, उससे जो अवरली पे मैंने देखा, हाँ सर, तो वहां पे 38% जो रिप्लेसमेंट है फिबो का वो था 678। फिर भी वहां पे भी नहीं गया वो, ओवरले पे भी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, तो वो तो बहुत वीक मुझे लग रहा है। पता नहीं क्या होगा उसका। काफी वैसे भी वो बोलते हैं ना, कोई स्टॉक की साख नहीं होती, एक बार साख मार्केट में वो उस कैटेगरी में अभी है, उसका बहुत लफड़ा है। न्यूज पीरियडिकली आती रहती है, इम्पेक्ट नहीं हो रहा, मगर जिस दिन हो गया ना इम्पेक्ट तो इसका तो बहुत बुरा हाल होने वाला। और एक लास्ट बात बताओ, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। यस सर। टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अभी ट्रैक नहीं किया, मैं कर दूंगा एनालाइज, फिर कुछ बता पाऊंगा। इतना डीपली नहीं किया जैसे इसमें किया है मैंने। एक ये है, फिर एसबीआई है, ये सब रडार पे 4-5 स्टॉक ही मैं ट्रैक करता हूँ। एसबीआई में क्या लगता है? वो थोड़े दिन मीन्स कोरिलेशन वाइज है ना सर, उसमें ऐसा है ना कि कोरिलेशन वाइज हम जाए ना तो एसबीआई और एक्सिस दोनों एक ही साथ चलते हैं। मीन्स वो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, वो घटेगा तो वो घटेगा। तो यहाँ पे डिफ्लेशन है अभी एसबीआई कंपेयर टू लेस फॉल देन एक्सिस। तो अगर एक कोरिलेशन में फिर से आएगा ना तो वो उसी के साथ चलेगा, तो ज्यादा फॉल की मीन्स चांस है। मगर देखते हैं, उसका टेक्निकल इतना वीक नहीं है, मीन्स देयर इज द स्ट्रेंथ बिटवीन सम वीकली एंड मंथली चार्ट, इसके जैसे नहीं है इसका। और थोड़ा बहुत दूसरा ठीक है। कौन सा ट्रैक करते हो आप? मैं तो काफी लिस्ट है, मगर मेरा क्या 4-5 वो उसी को प्ले करता हूँ ट्रैक। तो आपका जो लिस्ट है ना, मैं सर 2020 जुलाई से कर रहा हूँ वो ट्रैक, आपका पूरा लिस्ट। वो कोइंसिडेंस है कि आपका और मेरा लिस्ट सेम ही है। अगर आप मेरा ट्विटर लाइन पे देखोगे तो वही वही स्टॉक है मेरा ट्रेडिंग में भी और चार्ट में भी। स्वरंजीत भाई, हाथ नीचा कर दो, बुलाएंगे आपको इनके बाद। पोली के ट्रैक किया हुआ है, दीपक नाइट्रेट है, पीडी लाइट माय फेवरेट, वो उसने बहुत पैसा दिया है मुझे। फिर पावर ग्रिड है, वो भी बहुत मेरा फेवरेट हैवी वेट है। मगर उसका क्या होता है कि मीन्स उसका 3% जो फॉल होता है ना या अपमूव होता है ना पावर ग्रिड का, इट इज इक्वलेंट टू दीपक नाइट्रेट 10% रिटर्न इन ऑप्शन। जब दीपक नाइट्रेट 10% पड़ता है तब मैं जो ऑप्शन में मेरा आरआर होता है ना, वो पावर ग्रिड में 2-3, क्योंकि वो लेस वॉलेटाइल है, बीटा बहुत लो होता है, तो उसमें है ना 3% मूवमेंट में भी आपके ऑप्शन है ना 3 गुना हो जाती, तो इसीलिए वो मेरा फेवरेट है।
ठीक है. Thank you, Dr. Saab. Thank Sir, you very much. sir, Most sir, welcome, sir. we have Harmeet Chawla. Harmeet sir, can you speak नहीं about नहीं नहीं geopolitical? नहीं 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 एक मिनट. आज स्वरंजीत भाई बोलो. नमस्ते सर. मैं अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहता था यूएस मैक्रो एनवायरनमेंट और इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व उसके बारे में 1-2 मिनट बता दूं. हाँ बोलिए. अच्छा, सो हमारा ना यहाँ पे यूएस में 8.3 इन्फ्लेशन रेट है अभी, और अगले 2 मीटिंग जून और जुलाई में जो होंगे ना, हमारा इंटरेस्ट रेट 0.75 है अभी. मेरे को तो लगता है अगले 2 मीटिंग्स में ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, probably 50 या 25 basis point to get the inflation under control, because that is the most pressing issue right now in the US is the inflation. So as the inflation starts improving over time, I believe most likely they will start backing off in September. So I think the Fed, as soon as they have some lower inflation prints, they will actually become dovish and start backing off on the inflation rate. Because what they need to do is there's an election coming up later this year in November. So it's usually whoever's in power, they always want to show that the stock market is doing good and everything is looking well, inflation is under control. So I think later in September is probably when they'll become dovish, if not sooner than that. So I think the next 2 to 3 months is a good, choppy at the bottom. So आप जो भी stocks या mutual funds लेना चाहते हो, I think this is a good time to accumulate. And then later on this year, the market should do better as U.S. Fed becomes dovish. And I think all markets, they coordinate together. Even U.S. and Indian market, they all talk to each other through the what's the BIS. So Bank of International Settlements, they all get together and talk fund rates and what they should do with interest rates. So I think it's all coordinated, and that's why we always see all the stock markets rise and fall together too. So I think it is going forward, probably next 2 meetings, June, July, increase, and September, I think they will start become dovish, if not sooner than September. If they show inflation rate prints coming like at 5% or in a couple months, they will start backing off even sooner than September. And I think the main 8 point, last point, and then I'll stop, is our debt to GDP in the US is 130%. So this shows that US Fed is in a rock and a hard place. They cannot raise interest rate. I think the ceiling that they can go up to is 2%. More than 2%, if they go, the interest payments on our debt would be higher than the military budget for the year. So this is where they're really in a bind that they cannot raise interest rate more than 2%. And I think this is where India is in a much better position, where India's debt to GDP is much lower. So you have a lot more flexibility. RBI has more flexibility there. And I want to, is it 70% debt to GDP in India? 90%. 90%. Okay. So I mean, India is in a better position than US, but I think our ceiling is 2% here. So this is how I see the next 2 to 3 months. Great time to accumulate your assets, and then I think we should have a rise in the market later this year. Thank you. Where are you from, Suraj? So I was born in India, and then I grew up in California here. Now So where are you? California. California. No, which place? California is huge. Bay Area, so Northern California. Okay. It's a small town, Livermore. We have some wineries here, maybe like 50 plus wineries. So like the Redwoods? It's yeah. beyond, it's near Redwoods? No, not quite Redwoods.
Okay. सर ट्रिप मारते हैं इनके पास. Okay. Yeah, Silicon Valley mein. So a Yeah, lot yeah, of technology and stuff is yeah, right here. yeah. Thank you, But I think thank you. even all the tech stocks are beaten down a lot. So I think if you can check which one, if you have been eyeing any good tech stocks, you can take a look again. I think they've all at a much better price now. Yeah, Thank you. thank you. Harmit bhai, बोलिए. Sir, good evening Good and evening. good morning to. गाना लेता हूँ. Hi, sir. Sir, before Harmeet speaks, I had invited Harmeet to attend this discussion. He is an expert on real estate and geopolitics and is a very prominent TV panelist also on real estate discussions. Okay. So I just asked him to join and give his perspective on the interest rate hikes and his geopolitical assessment for the rest of the year, which could impact crude and inflation. Yes. Sharadji, Welcome, Harmit bhai. Sharadji, thank you for having me. Thanks, Dheeraj and Samad. Thank you, sir. This is probably the hardest place to speak because I'm not too much of an equity guy. But yeah, Doesn't पढ़ते रहते matter. We are also not. अरे नहीं sir. So as Dheeraj was saying, I have about 23 years of experience in the real estate business in India. एंड अभी मैं खुद भी डिफेंस के धंधे में भी हूँ और एविएशन के धंधे में खुद भी हूँ एंड आई कीनली read, understand. I don't watch television. I haven't watched television for 5 years. तो मैं पढ़ता काफी हूँ and Dheeraj and me keep talking about and discussing a lot. And so I'm just taking a tangent before we come to the main point. So, last year at the height of the second wave, while we were discussing, there was a lot of play happening globally when it came to logistics, came to supplies, came to economies. Uh, a lot of money from the government was going out as dole out in lieu of, whatever loss of income to the lowest common denominator or the mid common denominator in the economy, be it the US or, even countries like India. So obviously that was to pep up demand, have money flow into the economy. People could spend money, which is good. But then, people also get used to free money without being in the long term adding real value to the GDP. वो पैसा खर्च हो रहा है but GDP में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता because you're not really earning a salary on it, which is what has happened to a large extent in the US. I'm trying to put up a factory in the US. वहाँ पर नौकरी है बट नौकरी करने के लिए लोग आने को तैयार नहीं है even if you're ready to pay them $30 an hour. So there are certain parallels which cannot be drawn between let's say a country like India and the US where inflation is high, so is here. There are other parallels, but the nuances plagued by each of the economies and countries are very different in my opinion. I could be wrong if somebody is to the contrary. Crude, in my opinion, was always going up. So, Dheeraj and me would speak about because, there was a lot of military build-up happening everywhere. Military build-up, logistical issues in different areas like the Black Sea, issues in areas in the Mediterranean. So when these things happen and you are anyway in a cycle which seems to be a commodity bull run coming up, you don't evaluate 6 months, 7 months. You look at where do you stand 4 years, 5 years down the road. Because as a businessman, I like to see where I am going to be 5, 6 years down the road. Because if I'm going to invest money, any business plan doesn't kind of transpire into any profit and losses within 1 year. It takes at least 2 to 3 years, 4 years before you get into a clearer picture of where you are. So I evaluate things from a 5, 6 year standpoint. What are the direction? What are the winds? For me, the US pull-out in Afghanistan was something I didn't buy as a blunder. I bought it as a very thought-out strategy by the US. They chanced upon something. And they started moving a lot of their... and why I'm sharing this with you is because this also says that, I am pretty
I would not use the word bullish or bearish, but I am of the opinion that the coming 8 years are going to be quite conflict driven globally. And when I say conflict driven, these are not indirect conflicts which we've seen over the last 15, 20 years where there are theaters of war, but they really do not impact the economies, so to speak. In a way, they end up aiding the economy. But the conflicts that I foresee, which started with a Ukraine and a Russia, which a lot of people and I have been writing, including some very eminent strategists in the geopolitical who felt even 5 hours before Russia invaded Ukraine that the Russians would not invade. And I remember having written that Russia is going to invade Ukraine way back 7 months back. When the Black Sea problem started, Crimea, kind of erupted again. And we know that Ukraine and all these areas, in terms of food and all, are big land masses in Europe. There are critical minerals available for chips, urea, fertilizers, which become a problem. So that adds to the problems in global economics. Supply chain continues to be a problem. You see the masks returning back in India. So, you have some kind of a COVID uh, thing rising back again everywhere. Whether they, I hope it's not at the same level as it was before. But conflicts are definitely going to rise. So the conflict that you see in Russia and Ukraine, in my opinion, is only going to slowly spread. And as I always say, wars can be started, but once it's started, war tends to have its own brain. Uh, so you might factor within an economy or a market that this is already factored in, but you do not know 2 months down the road how and where the war is going to turn. What ugly head or ugly monster are we going to face 3 months, 4 months down the road? What uncertainty or chaos is going to develop out of it? Uh, Slowly, if you see, things are also getting vitiated between countries within the Middle East, be it Iran, be it Syria, be it Turkey. So, things were pretty quiet for 2, 3 years because of the pandemic. There were internal rifts. Now those rifts have become more external and exogenous. Uh, so while I'm saying this, I'm not saying everything is bad. These are also, I always say when chaos kind of takes place, uh, there are two kind of people in the market. One who run by default towards the catastrophic end of the market, and the others who see, okay, when there is chaos and catastrophe, that is also the most golden opportunity for creating order and seeking new growth opportunities, because a lot of people will end up either dying or killing themselves out of fear. Uh, because as in management, I always say that the best strategy is to change your best strategy at the height of its, uh, you know, when it's reached its zenith. It's always best before the market compels you to change your business strategy. You should be the one reinventing your strategy to be relevant in the changing times. Uh, Now, when you look at all these things, and you look at if you see at UAE making a statement of X, making a statement that the numbers on the crude, which is 120 by 20, 120 by 6, which is now kind of breached the 120 mark and it's staying there, is not even close to the highs on crude. So that kind of eventually, as one of the gentlemen said, is going to impact the aviation sector. It's going to impact inflation. It's going to be a core basket for the Indian inflation. It has predominantly been a non-core area for the US because till 2019-20, the gasoline was at about $1.9 to a gallon, which is about 4 liters. So even today, I just came back from the US. We were retailing at about $4 a gallon, which is roughly about 65, 70 rupees to a liter. And the per capita income over there is not comparable to one in India. So 110 or 100 rupee per liter in India does pinch you very hard. Uh, and the government in the US has always passed on whatever benefits on the lower side of the crude they've had to the public at large. I am nutshell of the opinion that in about you will see extreme pains in the global economy. I see that kind of starting to really show towards the end of this year. I'm not a very bullish guy when it comes to
the economies or things really doing well, because I foresee a lot of turmoil going ahead. Uh, so for me, I am of the opinion by 2024, COVID would have ceased to be the problem. There would be larger issues inherent within economies, inherent between geopolitics, and also to understand, gentlemen, that people globally have become extremely belligerent, tired of the politics being played out by their respective governments. People are losing faith within the political systems, and the more people lose faith in the political system, the more uh, people in the power try to cringe and stay in power, which means, as the Americans have said about a week back, that the globe is moving more towards autocracy than democracy. So, what I'm trying to say in many words is we're in a time of turbulence and chaos. Uh, it's not an orderly time. I don't see orderly time 5 6 years. I see turbulent times. In turbulent times, you cannot have markets and economies which are going to be orderly. Uh, and considering while all this is going on, there is a great shift in the market space, which is digital, which is AI, which is quantum space, which is blockchain. So 10, 12 years down the road, you will not find a lot of companies which are relevant today, because the marketplace is also going to change. With that marketplace changing, a lot of the ancillary businesses are also going to change. So it also depends upon the adaptability of a lot of organizations, be it IT, be it AI, be it the other places. How are they going to adapt to those changing economies and paradigms? So I think that's what my two pieces right now. If that makes sense or it helps anybody understand any perspective. Thank you. Thank you very much. One thing, Yes, sir. what you mentioned about AI and blockchain and whatnot, Yes, sir. you have hit the nail. Yes, sir. Almost 70% of the businesses will be out of shape. I'm not saying Absolutely, sir. out of business, they'll be out of shape. And Absolutely. it's going to be a great challenge to navigate for Absolutely. seasoned investors or laymen and about I was aware of the conflict in Russia Yeah. and would spread to other countries. But Yes, sir. what you said about our, our Turkey, Syria, and Iran Yeah. has made me thinking, that uh, there also there is a problem, a Yes, sir. It combustible is. problem. It is combustible. It will combust. Yes. It will not So combust right now, but it will combust in about 24 months from no, now. I said combustible. Absolutely. And that is 67% of the crude energy of the world. Yes, and So if that goes south the way I am assuming, God forbid it shouldn't. I hope my words are wrong. But if it does, we are possibly sitting at anything between $200 to $300 a crude. oh, let's not scare people. No, so that is it. But yeah, if I can take just another 30 seconds on the blockchain. Yeah, I was in fact in a very critical meeting today with one of the defense establishment I can't name. yeah, And I said, while in India people are, still thinking about apps, the Americans and the Chinese and the other countries are already sitting on quantum computing, anti-quantum computing resistant technology, blockchain, because if you're going to have 5G and your bulk of your data, your bulk of your marketplace is going to be digital, which it will be, you cannot have an interface and a technology which is not. So, what India right now is doing is focusing on apps while it should be focusing on blockchain, AI, 5G, LTE, and should be on quantum computing. Because if I have all my data in marketplace and my money being exchanged on the digital platform, I am already open as a country, as globally, to mixed warfare. And mixed warfare doesn't require nuclear missiles. All it requires is for me to bring down your grid. It could be your economic grid, it could be your digital grid, it could be your power grid, to absolutely bring chaos to your economy. So, and that's already happening to
multi-store companies globally with the kind of hacking that is happening. And with quantum computing, you're going as much as about 1500, 2000 bits of hacking. And China and America is already working at making quantum resistant, SIM cards, which are going to go into your Android and mobile phones. So your phones are deterred from hacking from a quantum computer. I mean, India is not even on the radar there. I mean, we're not there. So, uh, as you sir rightly, kind of seconded my point that in 10 years globally you will have a lot of people in the stock market that doesn't even exist. So no, but I'm sure after 5-6 years, our 3G will be working fine. I'm sure, sir. I take that with a pinch of salt. I appreciate that. I hope so. No, but actually, this point is so valid, Yeah. not for the stock market, generally. Yeah. It is Generally. so valid. Without data, you will die. Absolutely. Without 5G, there is some issue, some government notification. Yeah. I don't know what was what, but I don't know how we are governed and will be governed. Backfinder, 1 मिनट में लेता हूँ. हाँ, backfinder, बोलो चल. I just want to ask Harmit a question. Yes, sir. So, Harmit, how is blockchain, first of all, very energy intensive in some sort of sense? And I'll give you a paradigm, the way to think about it. Yeah. Now, back in the day, we used to have mainframe computers, right? Where pretty much everything, processing and the data was on one place. Yeah. Then we went to a distributed system, which is your home PC, right? Yeah. And then again, we come back to the cloud, which is essentially consolidation of the same. Yeah. And then we go back again to blockchain, which is a distributed system. Yeah. I mean, we're just playing round robin, right? I mean, we're just going back and forth. And the question I want to ask you is when you compare to the cloud, is the cloud more efficient energy-wise and versus the blockchain? So, Chief, I will be very candid on this one. I'm not a tech guy, and I don't want to take this question because your question is very specific from a technology point. I am purely from a business perspective. I look and evaluate the space to be as a businessman. While I understand your question, but I won't be the most competent to be giving an answer, and I would not even make an attempt to even give you a 50% answer on this one. That will be making a fool out of myself. Appreciate your honesty and candidness. Yeah. The other thing I want to ask you, sorry, I just joined, so I may have missed a lot of what you said, but I was reading today about I think China, US managed to test quantum computing. Yeah. Right. I am shit scared. I'm shit scared because today all your systems use encoding of 256 hash. Yeah. Yeah. Right. Yeah. That can be broken in seconds now. With quantum computing. So all your 256 is nothing for a quantum. Exactly. All your security on your phones, on your laptops, on your computers, on your systems are just gone, completely gone. And that's shit scary. So why would we want to go digital, more and more digital? Because the more we go digital, the more likely we're going to, become more vulnerable. Second thing is, one thing that nobody has cracked as yet is compression technology, right? We're generating so much more data. We continuously generate more and more and more data, and we're storing more and more. But nobody's really come out with a better compression algorithm, right? And the question then is, from an energy perspective, if all this data is continuously going to be stored, I mean, the world is not going to ever see a decline in energy consumption. Yeah, it's just going to keep going up. Yeah, that's what he said. So the funny part is that about I might be wrong by a few billion or trillion here there, but from what I understand, about $3 trillion of money has been pumped in
to navigate the space of green energy over the last decade or so. Okay, and despite that, the energy basket for crude has only gone up by another 2%. Yeah, the percentage for green energy has gone up, but also the crude basket has actually gone up by another 1.5% too over the last decade. No, that's also because 45% of your energy is actually used to manufacture plastics, to manufacture cars, absolutely, to manufacture absolutely. mobile phones, computers, everything. Absolutely. See, and you see right now, while the US is going all gaga about the energy crisis, but they a lot of these areas they've opened up Bitcoin mining, and Bitcoin mining is serious use of energy. So they're trying to go into as much as renewable, green, solar. But end of the day, criticality of using energy for people and the most mundane of requirements for human being is a priority over Bitcoin mining. But then that's how the economies, I guess, green economies work. And you need to kind of feed people, give them business opportunity, job opportunities to be, kind of bring the whole circle of economics into play. So I guess that's something that we'll always keep talking about. As I always call, that's a absolute theater of absurdity which will never go away. So you'll keep following your own tail on that one. So while the Middle East is trying to wean off energy, but the fact of the matter is, if today Saudi Arabia is going into a very plus deficit, plus in terms of what they've earned on their last 1 year on the crude, and that's allowing them to kind of re-energize their funds, re-energize their expansions, open more avenues for economies, other venues of economies. And I always quick with a couple of people. I said, if Saudi Arabia stops selling crude, I'm sure they will not be able to survive their economy by selling khajur. They don't have anything else, and they're not really the haven for tourism. So neither is Iran, neither is Venezuela, neither is Russia. So till these economies find an alternative way to, kind of bring in double, 2-3 times X their money that they earn out of crude, give me one good reason why they would like to sacrifice crude for anything else. There is no reason. True, very true. I'm just using a business logic. If I am making 100 rupees a day, and I cannot get an alternative which can give me a 3-4x and a sustainability over 10 years, why will I kind of try to tinker with my 100? Yeah. My 100 is a safe and secure bet, and I understand that game in and out. I can take the losses in it. I know when the losses will come, and I know when the highs will come. In a new game, unless and until I make a couple of X's more over a periodic period of time, and I understand the game, and I can create a maze of absolute corruption within that business model, I don't want to have that as a macroeconomic parameter in a country's economy. Okay, sir. Thank you so much, sir. Pleasure, sir. Thank you for having me. Thank you, Dheeraj. Thank you so much. Pleasure, sir. Okay, next. सर कमल जी है, डीजे कारा है. Akara, sir. So yeah, my views on the market haven't changed for the past week. I'm not changing my view daily, so yeah, I continue to be negative on the markets till we see our institutions changing their positions. Both FIIs and DIAs have been short on the market since the past 1 week, 10 days. So I'll just side with them, and that's about it. No, but DJ, the DII is being short in nothing but arbitrage books, right? Is that something you even bother to look at? See, it's they don't short in huge quantities and they don't short often. But when they are, I think they initiated the short positions when the series started. They were probably expecting a decent fall with for this RBI meeting. So
I haven't checked the data yet, but I'll need to look and see what they have done with their short positions. Because if they are keeping it, uh, then they're probably expecting more downside. And the FIIs have been short today. Today, the entire morning when the market was up, they were just writing calls left, right, and center. So, yeah, I'm not expecting a big rally from here. But if we get a small bounce and all, I'll just look to short. Sir, just to update the viewers and you also, suddenly something has happened in US and it has gone down, deep down. Everything has gone down. तो कितना डाउन? डीप डाउन मतलब 300 पॉइंट, जो 55 पॉइंट था वो 300 पॉइंट अभी है डाउ जोन्स। नहीं हाँ, नहीं, वो 200 What's it in terms of percentage? अरे 250 है, वो ठीक हाँ है। सर, कोई इंटेल का न्यूज आया था कुछ, some bad news from Intel. Okay. Dow suddenly fell 200 points. It was almost getting into green, but इंटेल को अपने को क्या लेना देना है अपना? anyway, इंस्टीट्यूशंस ने तो आज पोजीशंस बना लिया अपनी, तो ये मैटर ही नहीं करता नहीं कि नहीं, डाउ क्या ऐसा करे। नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ इंटेल है क्या, अपने इंडिया महान, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। आपका वाइफ का ज्वेलरी बेच के शेयर ले लो बोलते हैं। अभिषेक लेगा वाइफ का बेच के? सर मेरी वाइफ मेरे को बेच देगी। ओके, कीन इन्वेस्टर बोलो, बैंगलोर वाला भाई बोलो। Hello, sir. How are you doing? फाइन फाइन फाइन। Yeah. So most of the data points are leading the same thing. Either a long short or a long investor. In this case, I think I'm seeing the data that points out to clear-cut recession in India. As I was mentioning last time, a lot of SME, mid-size SME, small SMEs with a turnover of 50 lakhs to 1 crore. The rate of interest they borrow in the private market has really shot up, and banks are not actually funding. I'm not sure how many people are aware. ICICI Bank is a large bank which shut its corporate lending quite some time back, and lending is very tight, extremely tight. And today the RBI actually they're very negative. After so many years, I've seen they're very negative on even the growth outlook, and they've increased the MSF to 5.15. So this will probably have impact on the banking balance sheet. I remember in 2011 or 12, I think that time some RAW would increased overnight to 9%. So I'll not be surprised that next few months we may get to see those levels. And also in the equity market, there is a sectoral rotation of selling is happening. Banking any which ways first sold off, to the 2018 level. Then you have IT, now I think chemical sector has been getting that thing done. I think auto will follow through, I guess. And also the GST, I think, on traveling and casino, I think that would be interesting stocks to watch out. And I think pharma also may have some impact going forward. That's it. Yeah, Kamal bhai. Good evening, sir. Sir, good evening, Samrat, DJ, everyone. Good evening, Kamal bhai. सर एक दो अपडेट है। एक है कि 14th June को we have got Purnima coming up, where there could be a major bottom formed, not major bottom, but a temporary bottom formed. So let's see how it works really. And ऐसा लग रहा है कि एक छोटा बॉटम बनेगा और ये बॉटम नेक्स्ट पूर्णिमा तक खींच सकता है, which I think positions should be hedged now.
ऐसा लगता है, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स थ्रू. एंड दूसरा was like lot of buying, or buying is emerging. I don't know if I'm watching that wrong or right, but lot of buying is emerging into PSU bank stocks. I'm not sure if I'm correctly watching. I'm correctly estimating that. आपका क्या व्यू है सर? नहीं, बराबर है. PSU बैंक में बाइंग है. 2 दिन आज चलेगा, बाद में घुस जाएगा. बाद में घुस जाएगा ना. हाँ. शेयर बाजार में वो घुसना ही होता है. ये 2 साल जो गया ना, वो ऊपर ऊपर, वो दोबारा नहीं आने वाला है. खाली घुसने का ही आएगा. समझा? हाँ, ऐसा लगता तो नहीं है कि टॉप आएगा. एटलीस्ट जून 2023 तक तो मुझे नहीं लगता है कि टॉप कहीं पे आएगा. टॉप मतलब टॉप मतलब इतना ऊपर जाएगा कहीं पे, ऐसा इधर 12,000 अभी रह जावे तो गनीमत है यार. इधर का 16, 17, 18 बात करता है. आई सी इक्विटी investing, equity valuation is an art. Right. If you apply it with, तो ये सब नॉनसेंस के भाव थे दोस्त, वो भूल जाओ आप. नहीं, वैसे तो मैं प्राइवेट बैंक्स में काफी शॉर्ट बैठा हूँ सर. मैं वैसे तो नहीं तो नहीं, आप क्या कर रहे हो वो बात नहीं है. ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं. क्या प्राइवेट बैंक में एक्सिस बेचो, बहुत अच्छा रहेगा. नहीं सर, एक्सिस, आरबीएल, आईसीआईसीआई तीनों बेचा हुआ मैंने. अच्छा. Keen investor, I wanted to ask you GST on traveling, you said. Sir, there was a news basically on see now how government is going to collect taxes. Now, if you look at their balance sheet, the only way they can either raise money through corporate taxes or individual taxes, or GST on the Delta Corp and all those casino. No, that I have read. Casino on travel. I'm just guessing. I'm not sure whether that will happen. If Okay. yeah, Okay. just It's yes. a conjecture. Yeah. Yeah. Okay. Yes. अभिषेक बोलो. हाँ सर, तो ये बात चल रही थी सर कि ये बॉटम करना है कि यहाँ पे लग जाएगा बॉटम या नहीं लगेगा. But there are two things into this. कि one of the things that you can do is you can catch the bottom and get an award for it. ऑस्कर अवार्ड मिल जाएगा, ग्रैमी अवार्ड मिल जाएगा आपको कि आपने बॉटम पकड़ लिया और यहाँ से इंडेक्स चले गया 16,000 से लेके चलो मान लिया 17,000 18,000 चले गया. और सेकंड ऑप्शन इज यू कैन मेक मनी. तो ये सेकंड ऑप्शन जो है ना सर, वो अपने स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स जो अपने पास है पोजीशन, तो वो सब ना सर जो ऐसे अपने अपने तो बोलते रहते हैं सर. वी जस्ट गिव दैट गिव आउट वेरी पब्लिकली कि मैं बोल देता हूँ कि इसको बेचो उसको बेचो. आई डो नॉट नो इफ पीपल हैव दिस कैपिटाइट और नॉट, बट इट इज जस्ट दैट ऑब्जर्वेशन होती है हमारी कि यहाँ से घुस सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड एंड इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. तो जहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है ऑफ लेट अस से 1:5 or 1:6, तो वहाँ पे जहाँ पे मिल रहा है लेट अस से यू आर विलिंग टू बेट 10 rupees and you're willing to make 60 rupees out of it or 50 rupees out of it. So this is where your focus should be for all the retail investors to be. But see, having said that, key retail investors hai, but you should not take outsized positions. Just take very very small positions, minor positions where you do not mind even if the 10 rupees goes what you're putting. तो वहीं पे तुम लेना position and don't bet more than what you can afford. That is point number one. And मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक है. पीपल आर लुकिंग एट सी आज आरबीआई का पॉलिसी आया 40-50 बिप्स रेट हाइक. सो जस्ट द इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है बियॉन्ड दिस, यू कैन जस्ट लुक एट इट इन द मार्केट. निफ्टी बैंक निफ्टी ने लेके चले गए ऊपर 500-600 पॉइंट 1000 पॉइंट जो भी था वो, बट देन इट कुड नॉट सस्टेन फॉर इवन 1 hour. एंटायर थिंग गॉट सोल्ड ऑफ बाय द एंड ऑफ द डे. तो ये जो बुलिशनेस जो क्रिएट हो जा रही है बिकॉज ऑफ ये है वो है, एंड पीपल ऑन ट्विटर, सी व्हाट पीपल ऑन ट्विटर आर लाइकिंग इज कि अगर मैं बुलिश बोलूंगा तो मेरे को फॉलोअर्स आएंगे, पीपल विल लव मी. हम लोग जो बेरिश बोलते हैं पीपल विल हेट अस बिकॉज दे डू नॉट लाइक स्टॉक्स गोइंग डाउन. उनका पोर्टफोलियो है ये है वो है म्यूचुअल फंड है
did not like it at all. तो ये जो caution जो हम कर रहे हैं ना सर, this is something which is I don't know invaluable. तो अगर लेते हो right spirit में, then well and good, and they should not blame us कि मैं ले लिया trade. See point यहाँ पे the thing is कि risk appetite की बात है, and second one is I will not know where have you taken your positions after नीचे आके तुम अगर bottom of the range में जाके position लेते हो तो it's but obvious कि तुम्हारा कटने वाला है sell. So today also if you just think about it कि 50 rate hike के announcement के बाद अगर तुम लोगे short position तो पक्का काटने वाले तुम्हारी. So the entire thing is about timing of the position and then the size. So these are the few things, and then जो बाजार है, chemical stocks is where you could definitely take a short position. यहाँ पे भी even after whatever fall you've seen today. But इसके बाद भी और बहुत ज़्यादा होने वाला है. See the entire narrative that was going on for chemical stocks was China plus one. So until recently, your Chinese ports were shut, and then there was about 80% capacity cut. So as of now, everything is reopened, and then they are willing to ship everywhere wherever they want to, and their cost of production is much lower than ours, irrespective of whatever taxation or whatever PLI scheme. सब कुछ जो हमारे पास है, even after that, Chinese cost of production is much lower. तो वो जब निकलेगा वहाँ से माल, and it's going to decimate the Indian market and the market share also as well as margins. तो ये होने वाला है in terms of export and even in India के अंदर भी. See, crude oil is going up what $121, $122 WTI at these prices where your raw material is more or less crude only. So यहाँ पे they will not be able to sustain their margins, and the valuations that we have right now are just crazy. So I think that's my limited observation on chemical stocks. And also there are quite a few other sectors, as I mentioned, auto to someone, कि वहाँ पे भी this is not the valuation where you should buy. कि तुम सोचोगे just think about the economic situation. ठीक है, 2018 is Nifty Auto Index का top लगा था, and right now we are still at 2018 levels on most of the stocks. In fact, much higher in terms if you look at M&M. That is just one example I'm giving. कि बात ये है, have the sales skyrocketed so much that you can have these prices? Answer is no. Do people have with rising interest rates, and if people are going to buy a car, no, उसको refinance करेंगे अगले साल क्योंकि for some other reason, so it's going to increase. Your cost of ownership is going to increase. Also, जो sales numbers और तुम्हारे revenue figures जो आ रहे हैं, that's only because of inflation. वो बोलेंगे कि तुम्हारा चिप शॉर्टेज हो गया, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्टील का भाव बढ़ गया, हर एक चीज हो गया. So you are selling them at a much higher price. Just look at a normal car, Swift. Okay, I'm sure all of you would be knowing the prices of Swift. ठीक है, अभी जो 2018 में, if you had to buy a Swift top end, okay, I think you would have had to pay around 6.5 lakhs ex showroom. Right now, the same Swift is for 12 lakhs top end. एक्स शोरूम बता रहा हूँ मैं, बैंगलोर में इतना होता है. तो जस्ट लुक एट 40-45% इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में, एंड डिमांड उतना है नहीं. पहली बात तो whatever numbers you are seeing are all fudged, point number one, and it's only because of inflation. So there's no point of being bullish on auto at this level. ठीक है, that's it. Thank you. Yeah, fact finder, you wanted to say so. और कोई है भाई, समझ भाई? नहीं सर, अभी नहीं है कोई सर रिक्वेस्ट. तो फिर बंद कर देवे. हाँ,